Hello everyone. ऋषिराज लोहानी है। आज हम लोग डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में जो डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग स्टडिंग डिफरेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, we should learn about DPSP. What is DPSP? Okay, so why shouldn't we start this with the background of DPSP? So in today's videos, we will study about DPSP. It is enshrined in our constitution from Article 36 to 51. Okay, in Indian Constitution. Okay, so firstly we will study about the introduction of this DPSP. Intro. Okay, so after reading this introduction, we will study about the background and other things. So let's read about DPSP. So if you see DPSP, it is a it is in part 4 of the Indian Constitution. Part 4 of the Indian Constitution. From Article 36 to 51. Okay. And I will also tell you the trick to remember all these articles, because uh, it is important to remember or learn the articles and उसमें कौन सी जो है ना, कौन से जो टॉपिक है किस आर्टिकल में है। ठीक है। नाउ सो अगर इन डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी को कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसके जो इसके डीपीएसपी के जो ऑब्जेक्टिव है, अगर उसको देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि ये गारंटी देता है ऑफ व्हाट, ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। ठीक है। एंड नाउ तो इस ये जो डीपीएसपी है सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी से डील करता है। और अगर इसका इम्पोर्टेंस देखें तो डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, है ना, दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो इसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फंडामेंटल द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर डीपीएसपी का अगर सोर्स देखा जाए तो व्हाट इज द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज इंस्पायर्ड। इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। Irish constitution. That's why it is given that DPSP is taken from Ireland, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937। ठीक है। और इसको एक और चीज़ से इंस्पायर्ड है जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। एक और जो इम्पोर्टेंट थिंग है, टॉपिक पॉइंट है जो आपको लर्न करना चाहिए, ये है कि जो अंबेडकर साहब हैं, डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो फंडामेंट डीपीएसपी इज अ नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो नोबेल फीचर किसने बोला है? अंबेडकर साहब ने बोला है। नाउ नेक्स्ट इज
So we have studied about the introduction. Now there is a one more thing that I want to highlight here, that is the goal of DPSP. The goal of DPSP is welfare state. That's the way our state, India, or the states also, administrative states, they make various policies for the upliftment of downtrodden sections of society. States want to uplift their condition so that they can fully develop. Okay. अभी हम लोग का टॉपिक क्या है? हम लोग का टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो जो अगर डिफरेंस देखा जाए उसके पहले कुछ अमेंडमेंट्स है ना, डीपीएसपी का आर्टिकल्स हैं वो आप लर्न कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बताऊंगा तो उसमें आर्टिकल्स का जो ट्रिक है वो मैं शेयर कर दूंगा। तो चलिए डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। ये देखिए, तो फर्स्ट अगर देखा जाए तो डीपीएसपी है। डीपीएसपी क्या है? इधर मैं डीपीएसपी लिख लेता हूँ और इधर फंडामेंटल राइट्स लिख लेता हूँ। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इसे लर्न कर सकते हैं। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है? जस्टिसिएबल कि आप जब कोई डीपीएसपी का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट्स नहीं जा सकते, है ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यू कैन नॉट क्लेम दिस डीपीएसपी। बट जो फंडामेंटल राइट्स है जस्ट इसका अपोजिट है, ये जस्टिसिएबल है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगर नेक्स्ट इन द नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से दैट नो डीपीएसपी इज पॉजिटिव। पॉजिटिव विच मीन्स इट टॉक्स अबाउट गिविंग, है ना, गिविंग something to society, so that um, the the condition of the condition of the downtrodden or the deprived section of the society can uplift. बट जो फंडामेंटल राइट्स है वो नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इससे ना जो स्टेट है, स्टेट से ये जो कुछ राइट्स ना हम लोग ले रहे हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ नेगेटिव इन नेचर, इट इज़ पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जो डीपीएसपी है इट हैज़ मोरल एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ठीक है। और इफ़ वी सी फंडामेंटल राइट्स, इट इज़ जो इसका जो क्या बोलते हैं इसको, इसका जो ऑब्लिगेशन है वो पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए ये बात करता है और लीगल सैंक्शन है इसके, है ना। यू कैन मूव टू द कोर्ट डायरेक्टली, इवन यू कैन मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, so it has legal sanction. Okay, the next slide, let's see. So DPSP and fundamental rights. Now see, there is one more point, that is DPSP talks about the community welfare. Okay, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं which talks about the individual welfare, है ना, welfare of individual. Okay, so next is जो फंडामेंटल राइट्स हैं that is automatically enforced. Automatically enforced means when anyone's fundamental rights is violated, they can move to dialectic court, or on the behalf of them, or other people can or move to the court. Automatically enforced.
But if you see the DPSP that needs legislation for their implementation. So legislation is very important. Without legislation, no, without policies, it cannot be enforced. Okay, so this is the difference. Okay, now I will wind up this class, and I will keep uploading the videos on YouTube. So tell me about what uh, how was the video, and कैसा लगा आपको ये वीडियो, और बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं क्या फीडबैक है आपका, और आई विल ट्राई टू improve. So like, share and comment below. Okay, thank you.